हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आपण मैंने समस्त को सरत एजुकेशन स्वागत। आज हम ऑडिटिंग रो एमसीक्यू डिस्कशन करवा जहाँकि आम ओडिशा एसएसबी कॉमर्स लेक्चर पई आ किंबा यूजीसीनेट कॉमर्स रे भी दरकार लगे जहाँकि आम ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो अच्छी आम 35 टा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड अच्छी तारी ऊपर आज किसी क्वेश्चन डिस्कशन करवा पर भी पुणी से कंटिन्यू करवा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द ऑडिट process as per the audit assurance standard 1। आम ऑडिट एश्योरेंस स्टैंडर्ड 1 कौन जानते आमर पूर्व वीडियो रे मु गोटे डिस्कशन करथिली गोटे थ्योरी आपण मानकु देइथिले मन थिबो बॉड फारी फास्ट माने 35 टा को आमे डिवाइड करथिले कोन पांचटा ग्रुप रे डिवाइड करथिले जोटा कि फर्स्ट ग्रुप रे कोन थिला बॉड फारी। ओके, बॉड फारी कोन थिला बी रे कोन थिला बेसिक प्रिंसिपल्स एंड ग्रुप बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग ऑफ एन ऑडिट। सेकंड थिला ओ रे ऑब्जेक्टिव, डी रे थिला डॉक्यूमेंट, एफ रे फ्रॉड एंड फ्रॉड एंड एरर थिला। तापर ए रे ऑडिट एविडेंस, आर थिला रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, आई रे थिला इंटरनल ऑडिटर रिलाइंग अपन द इंटरनल। तापर फास्ट हमरे बी रे कोन होची ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड 1 होची बी रे माने बेसिक प्रिंसिपल ऊपर कहूँ व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ ऑडिट प्रोसेस ऑफ बेसिक प्रिंसिपल। बेसिक प्रिंसिपल आ गोटे कोटा आसुनी रिस्क असेसमेंट, ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट एविडेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन कोटा आसीबने कि कहबो एटा हबो एटा हमर आंसर हबो जोटा ऑडिट प्लानिंग। ऑडिट प्लानिंग ता हमर कोथरा आसीबने हमर कोन ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड 1 नहीं आसीबने। ओके, तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा अकॉर्डिंग टू ऑडिट एश्योरेंस स्टैंडर्ड 4 ऑडिट एश्योरेंस स्टैंडर्ड 4 हमें बॉड फारी पड़ले बीओडी एफ रेला फ्रॉड ता माने 4 होची फ्रॉड रहइबो फ्रॉड एंड एरर डिटेक्शन बाय द हमर बाय द डिटेक्शन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ कार ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी जोटा हमें पढ़ितले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्रॉड रिस्क फैक्टर। आ भीतर कोटा फ्रॉड रिस्क फैक्टर न होल पचाला सिंपल एमती मन रखले हे जो इंडस्ट्री कंडीशंस, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैनेजमेंट इंटीग्रिटी, ऑपरेशन कंट्रोल कोटा हबन आंसर आंसर हमर हबने मैनेजमेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट जोटा कि हमर फ्रॉड और फैक्टर मान ई आ भीतर एटा आसु नै। तापर नेक्स्ट देखिबा लेवल ऑफ मेटेरियलिटी एंड यूज्ड इन प्लानिंग द ऑडिट इज रेफर्ड टू कोन लेवल ऑफ मेटेरियलिटी यूज्ड इन प्लानिंग द ऑडिट इज रेफर्ड प्लानिंग तो कोथर रहउची प्लानिंग ता हमर कोथर रहउची ऑडिट प्लानिंग रहउची हमर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 8 रे माने सेकंड पार्ट हम कोन कोन ऑरा हमें पढितले ए डबल यू डबल आर डबल ए ऑरा। ओके, और ऑरा रो माने अछि माने थिबो आपण मानकर कोन ए रहउची ऑडिट प्लानिंग, यू रे यूजिंग द वर्क ऑफ एन ऑडिट यूजिंग तापर यू रे ला यूजिंग द वर्क ऑफ एन अनदर ऑडिटर तापर डबल आर रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट तापर ला रिस्पांसिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर तापर तेर रहउची कोन ऑडिट मॉनिटरिंग 14 रहउची एग्रीकल्चर कोन एनालिटिकल प्रोसीजर सॉरी। ओके, ता माने एटा होची फास्ट प्लानिंग कथा कहिची एटी कोन अब आंसर ऑप्शन कोन देला प्लानिंग मेटेरियलिटी, ओवरऑल मेटेरियलिटी, टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट। एटा स्टेट ओवरऑल प्लानिंग ऊपर देखो तीन टांग रहला मिस स्टेटमेंट भी अछि एठी अछि कोन परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी। परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी हमर प्लानिंग भीतर जाउनी ता माने एटा हिजो हमर आंसर। ता माने नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल एज पर द ऑडिट एश्योरेंस स्टैंडर्ड 6 रे कोन आछि हमर बॉड फारी माने आर होची कोन आर होची हमर रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल आ भीतर कोटा जाउने कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल कोटा जाउने कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन कोटा जाउने हमरा भीतर जाउने कंट्रोल एनवायरनमेंट जाउने एनवायरनमेंट हम कंट्रोल कोन एतरे जीवने। अब नेक्स्ट देखो व्हेन एन ऑडिटर डिसाइड टू रिले when an auditor decide to rely on the work of an internal auditor ऊपर रिले करियो ता माने एटा को केते नंबर हमर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कहूची रिलेइंग ऑन ऑडिटर्स कोन ऑडिटर्स डिसीजन कोटा एटा होची हमर
हमर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 7 लास्ट जोटा आई रे थिला इंटरनल ऑडिटर ओके तापर कंपोनेंट ऑब्जेक्टिविटी एंड डिलिजेंस एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑडिट प्लान प्रोसीजर रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट एटा हबो आंसर हबो हमर ए हबो कॉम्पिटेंस ऑब्जेक्टिविटी एंड डिलिजेंस द ऑडिटर शुड असेस द इंटरनल ऑडिटर्स तार कॉम्पिटेंस ऑब्जेक्टिविटी एंड डिलिजेंस ता 6 नंबर देखो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट प्लानिंग टू प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कौन हम आंसर हमारा डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑडिट प्लानिंग हम कौन पर तार प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कौन रहबो सेटा पचारछि इंश्योर दैट द ऑडिट इज कंडक्टेड इन एन एफिशिएंट इफेक्टिव मैनर एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट तामने एटो हम जणा पडुछि सी हबो आंसर ensure that the audit is conducted in sufficient efficient and effective manner tab 7 number देखिबा an auditor specialist is most likely to used in the audit of a auditor specialist okay an auditor specialist is most likely to be used in the audit of कोटा inventory valuation property plant equipment accounts receivable valuation of intangible asset हमर एटा होय कोठी कोन इन्वेंटरी वैल्यूएशन ही हमर हिताय आउ इगुरा रे होयनी नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ऑडिट एविडेंस आ भीतर कोडा ऑडिट एविडेंस नो बोली पचारला फिजिकल एग्जामिनेशन कन्फर्मेशन एनालिटिकल प्रोसीजर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन कोन हबने फिजिकल एग्जामिनेशन ता हबने जोटा कि हमर कोन ऑडिट एविडेंस रे आसुनी हम हेटा तो निजे फिजिकल चेंज करबा आ हेता ऑडिट एविडेंस रे कोडछला द कोन कहला नेक्स्ट ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी फॉर डिटेक्टिंग फ्रॉड ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी कोन रहबो फ्रॉड डिटेक्टिंग फ्रॉड पई limiting to fraud that materially affect the financial statement to design audit procedure to detect all fraud to obtain absolute assurance that fraud does not exist to express an opinion on the effectiveness of a fraud prevention control कोटा हबो आंसर हबो लिमिटेड येटा हबो लिमिटेड टू फ्रॉड that materially affect the financial statement auditor responsibility कहला to detecting करो limited to fraud next देखो the auditors overall review पचला the of the financial statement includes performing substantive test performing management calculation evaluating the overall responsible of all of the financial statement confirming accounts receivable कोटा हबो आंसर हमारा आंसर हबो इवैल्यूएटिंग द ओवरऑल रीजनेबलनेस ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर्स ओवरऑल रिव्यू कोन रहबा दरकार इवैल्यूएटिंग द ओवरऑल रीजनेबलनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ऑडिट रिस्क आ भीतर कोडा कंपोनेंट नुह नॉट ए कंपोनेंट रिस्क ऑफ ऑडिट रिस्क इनहेरेंट रिस्क कंट्रोल रिस्क डिटेक्शन रिस्क फाइनेंशियल रिस्क कोडा हबो आंसर हमारा आंसर हबो इनहेरेंट रिस्क जोटा कि हमरो हबनी गोटे कंपोनेंट हबने ऑडिट रिस्क रो नेक्स्ट देखिबा 12 नंबर द ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी फॉर सब्सिक्वेंट इवेंट एक्सटेंड टू सब्सिक्वेंट इवेंट्स रा केते पर्यंत हम एक्सटेंड हे परिबा द डाटा ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट द बैलेंस शीट डेट द डेट ऑफ द ऑडिट कंपनसेशन ऑडिट कंप्लीशन द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोटा हबो आंसर हबो ए द ऑडिटर्स the date of the auditor's report से दिन पर्यंत हमर ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी फॉर द सब्सिक्वेंट इवेंट्स एति बाटला से ट्रांसफर हे परियो नेक्स्ट 13 नंबर द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द मतलब एक्सप्रेस एन ओपिनियन कथा कहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऊपर ऑडिटर कोन दबो ओपिनियन दबो on the fairness of the financial statement accuracy of the financial statement compliance with laws and regulations efficiency of the entity's operation कोटा हबो आंसर हबो fairness of the financial statement कोन हबो fairness of the financial statement बुझे होची कोन एक्सप्रेस करियो जतले से fairness दबो तापर which of the following is not a type of auditor's report आ भीतर कोटा auditor's report नो not a type of auditor's report unqualified opinion qualified opinion adverse opinion disclaimer of opinion कोटा भीतर नो आ भीतर हमरो adverse opinion ता नो आ सब जाका आसीबो तापर नेक्स्ट 15 नंबर the auditor's responsibility for the detection of error auditor responsibility कोन रहउची detection of error रे limited to errors that materially affect the financial statement
to design audit procedure to detect all errors, to obtain absolute assurance that error do not exist, to express an opinion on the effectiveness of error prevention. What have answer? Our answer of limited to error that materially affect the financial statement. Auditor responsibility केतवाड़ रहिबो हमर material पर्यंत रहिबो, limited to errors that materially affect the financial statement. Next, the concept of materiality is best described as the amount by which the financial statement are misstated, the magnitude of an omission or misstatement of accounting information that could be expected to influence the economic decision of the users, the amount of audit evidence required to support an opinion, the likelihood of errors or fraud occurring in the financial statement. What have the concept of materiality amar kotra asuchi? Amar asuchi the magnitude of an omission or misstatement of accounting information that could be expected to influence the economic decisions of users. Okay, बुझी नेक्स्ट देखिबा 17 नंबर analytical procedure कौन पचाला analytical procedure are most likely to the used of the auditor is to obtain sufficient appropriate audit evidence to detect material misstatement, assess the going concern assumption, identify areas of potential misstatement, evaluate the overall reasonableness of the financial statement. कौन हो आंसर? हमारा आंसर हम आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट हम एनालिटिकल प्रोसीजर कौन कहूँ तार मेन एनालिसिस कौन करिवो एनालिसिस करके से जानिबो पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट कौन अछि सेटा से जानिबो चेष्टा करिवो. तापर नेक्स्ट 18 नंबर audit sampling is a statistical method used to examine all items in the population, examine a selected number of items from a population to estimate the characteristic of the whole population. ऑडिट सैम्पलिंग तामने सैम्पलिंग कथा कहूँ एटा गोटे सैम्पलिंग कथा कहला तामने हमर एटा ही हिजवा बी हिजवा हमर आंसर एग्जामिन ए सिलेक्टेड नंबर ऑफ आइटम्स फ्रॉम ए पॉपुलेशन टू एस्टिमेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होल पॉपुलेशन. ओके बुझी होची. नेक्स्ट देखिबा 19 नंबर और 20 नंबर एटा लास्ट क्वेश्चन हो द ऑडिटर्स रेस्पोंसिबिलिटी फॉर द डिटेक्शन ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन. ऑडिटर रेस्पोंसिबिलिटी डिटेक्शन ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इज कौन हो आंसर? आंसर हो limited to related party transactions that are disclosed in the financial statement, to design audit procedure to detect all related party transactions, to obtain absolute assurance that related party transactions do not exist, to express an opinion on the fairness of the financial statement. हमारा आंसर है ऑडिटर रेस्पोंसिबिलिटी डिटेक्शन ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कोड रहबो लिमिटेड टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन सेट लिमिटेड पर सेटी बाटला लिमिट रहबो ता पार्टी रे जते ट्रांजैक्शन हेछि दैट आर डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जोटा कि हमरो ऑलरेडी डिस्क्लोज हेक अछि सेती बाटला ही रहबो. लास्ट क्वेश्चन द ऑडिटर्स कम्युनिकेशन विथ दोज चार्ज्ड विथ गवर्नेंस includes reporting all findings and recommendations, discussing the critical audit matters, providing advice on improving internal control, all of the above. कौन होगा आंसर? आंसर होगा reporting all findings and recommendations. Auditor communication with those charged with governance includes advice to improve internal control. एटा ताहबो रिपोर्टिंग ऑल फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशन एटा ही हो आंसर. एटा सब जांग हेई पारे किंतु एटा हो तार बेस्ट आंसर एटा हो. ओके ये थिला ऑडिटिंग स्टैंडर्ड किछि क्वेश्चन थिला. पुन नेक्स्ट वीडियो रे आ किछि बाकी क्वेश्चन डिस्कशन करबा. थैंक यू.